The rear brake issue is a problem. It's squeaking, आवाज़ निकल रही है rear brake issue से. Hi guys, welcome to vlog my way. First of all, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों को मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए. आज की वीडियो है on particular issues of servicing the Royal Enfield Meteor which I have with me right now. Squeaking, आवाज़ निकल रही है rear brake issue से, तो वो देखेंगे. ऑयल फिल्टर चेंज होगा और बेसिक मेंटेनेंस, चेन ल्यूब, चेन क्लीनिंग एंड क्लीनिंग मेंटेनेंस का काम होगा आज. तो चलिए फिर देखते हैं. लेट्स गो इनटू इट. So guys, as you see, the entire oil has been drained in the tray below the bike, and the oil strainer has been removed, cleaned, and now we will be pouring in new oil. Time to put a new oil filter. So guys, the new oil filter will be going in now. There you go. Fresh oil filter. गाइस, तो भैया हम लोग को एक्सप्लेन करने वाले ये क्या चीज़ है हम अभी दिखा रहे हैं. तो भैया क्या है? ये है ऑयल फिल्टर, ऑयल देखने का जगह. यहाँ से आप ऑयल लेवल चेक कर सकते हैं. ठीक है. यहाँ पे अभी हम लोग ऑयल फेंक दिए, इसलिए ये पूरा एम्प्टी हो गया. जब हम लोग रिफिल करेंगे उसके बाद आपको दिखाई मिलेगा ऑयल यहाँ पे है या नहीं है. ओके गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू सी the refill of the mobile oil. It's official liquid gun engine oil for Royal Enfield bikes, and Meteor takes in about 1.7 liters of oil. ऑयल लेवल चेक হবে.
वी आर बैक। अभी हम लोग चेक करेंगे ये मोबिल ऑयल का फिलअप पॉइंट। सो अभी मेन स्टैंड में है, अभी पूरा फिल्ड अप है ये चेम्बर। तो अभी ये बाइक को अभी हम थोड़ा सा मेन स्टैंड में रखे हुए हम लोग थोड़ा काट करें, थोड़ा सा उस ऑपोजिट एंड में हम लोग पुल करेंगे बाइक को। ये देखिए ये नीचे चला गया। अगेन इफ़ वी कम बैक टू द मेन स्टैंड, ये पूरा फिल हो गया। सो दिस मीन्स मोबिल ऑयल हैज़ बीन सक्सेसफुली रिप्लेस्ड। सी अगेन गोज डाउन एंड अप। अभी हम लोग चेन क्लीनिंग करेंगे एंड इसको लूप करेंगे चेन को। तो ये रॉयल एनफील्ड का एसेंशियल्स चेन क्लींजर है। सो इस क्लेंजर से हम लोग अभी इसको साफा करेंगे। ये एक सर्विस है जो रॉयल एनफील्ड प्रोवाइड करता है घर आके, सर्विस ऑन व्हील्स। इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय रॉयल एनफील्ड ड्यूरिंग कोविड टाइम्स एंड स्पेशली फॉर दोज हु कैन नॉट मेक इट ड्यू टू बिजी शेड्यूल। तो बहुत ही अच्छा एक ये इनिशिएटिव है। एंड पूरा जैसे आपने देखा ब्रेक इशू वाज मैनेज्ड एंड उस पर काम किया गया है। एंड इंजन ऑयल फिल्टर चेंज हो गया। अभी चेन पे काम हो रहा है। और अभी हम लोग चेन लुब्रिकेंट डालेंगे चेन पे। तो चालू करते हैं इसको। ये चेन मेंटेनेंस एंड चेन हेल्थ बहुत ही ज़रूरी है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग योर चेन एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द मोटरसाइकिल। बहुत ही खूबसूरती तरीके से इस चेन लूप को डाला जा रहा है चेन पे। तो none of the parts are missed of the chain। टायर को रोल करके चेन को रिवॉल्व करके ये लुब्रिकेंट डाला जाता है। सो अभी बाइक को बेसिक एक ड्राई क्लीनिंग दिया जा रहा है। सिंस इट्स सर्विस एट होम, अभी वाटर गन या स्प्रे गन दोस टाइप्स ऑफ थिंग्स अवेलेबल नहीं है। सो हर पार्ट अच्छी तरह से पोछा जा रहा है फॉर डस्ट और ग्राइम। सो गाइज दैट वाज माय फर्स्ट सर्विस फॉर माय मीटियर बाय रॉयल एनफील्ड एट होम। Obviously they did not have the equipment, the spray guns and the jet guns, water jets, but जो भी किया है अच्छा किया है। The rear brake issue is fixed. I am not getting any sound right now. The bike is super smooth. The chain has been cleaned and lubed, as you saw. The bike is running very smoothly, and they have cleaned the bike with a damp cloth, and it's looking good. The oil filter has changed, as you saw. The engine oil has been replaced. So now hopefully next change will be probably at 6,000 kilometers. The next engine oil change. Video was informative for you. Hope this helps you. अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, and I will be back with more videos. Thank you and please take care and ride safe.